Hi, good morning and welcome to Ref Sports. It is not a good morning because we have what the news we have received on Rishabh Pant right now. It is not looking good for him. He suffered a major car accident this morning, early this morning, and since then we have seen a couple of videos of his car accident, his own images in the hospital, and it is not looking good at the moment right now. Although he's out of danger, but what's the latest situation? What's the complete details on Rishabh Pant? I'm joined by Boria Majumdar. I'm joined by Debashish Sen, and I'm joined by the sports editor of the Dainik Jagran, Abhishek Tripathi. Boria, I'll come to you first. Go to मतलब जो Abhishek first एक्सीडेंट because हुआ है Abhishek will have. I You should go to Abhishek अभिषेक first for the latest and then come to us. ठीक है मैं अभिषेक जी के पास जाता हूँ अभिषेक जी लेटेस्ट क्या है ऋषभ पंत पे रुड़की में एक्सीडेंट हुआ है उनका उसके बाद क्या लेटेस्ट अपडेट है आप हमारे दर्शकों को बताइए एक्चुअल में ये सुबह अपनी मम्मी को सरप्राइज देने के लिए रात में ही निकला था और जा रहा था रुड़की और वहां पे जैसे ही आप दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ एंटर करते हो एक ब्लैक स्पॉट है। तो हम्म उस ब्लैक स्पॉट में इसकी गाड़ी जो है वो टूटी पड़ी हुई थी। तो उसमें अच्छा डिसबैलेंस हुई और जाके राइट में जो डिवाइडर होता है, लोहे के डिवाइडर लगे हुए हैं वहां पे, उस लोहे के डिवाइडर को पूरा तोड़ते हुए वो पलट गई और उसमें आग लग गई। वो तो शुक्र था जो मुझे लोगों ने, जो वहां के ऑन द स्पॉट में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया है, डॉक्टर ने बताया है कि सीट बेल्ट नहीं बांधे था। हालांकि सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। मैं अभी भी गाड़ी में बैठा हूँ, मैं सीट बेल्ट बांधे हुए हूँ, मैं तो मतलब ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हम्म वो सीट बेल्ट नहीं बांधे थे इसलिए वो बच गए। क्योंकि जिस समय गाड़ी में आग लगी उनको सीट बेल्ट नहीं खोलनी पड़ी और उन्होंने तुरंत शीशा तोड़ा और शीशा तोड़ के कूदे हैं, तब उनकी जान बची है। तो बहुत, हम्म और गाड़ी की आप हालत देखोगे तो पूरी आग लग चुकी है। मर्सिडीज की गाड़ी बता रहे हैं और मतलब पूरी आग लग चुकी है, बहुत बुरी हालत है। तो अगर वो कूदते नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो भगवान का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। हम लोग we are right now refraining from not using Rishabh Pant's images of his raw wounds, so you won't get to see any graphical images in this live discussion. But Boryada, what we are hearing right now is that he was alone in the car. So is this sort of a mismanagement of one of the biggest asset in Indian cricket? Yes, I mean, people close to him like Aruni Basu from Times of India or Abhishek Tripathi, both of these people, I mean, I was speaking to, he was alone, right? Yeah, Why was he alone? I mean, apparently he was in Roorkee, so what was his manager doing? Why was he left alone? I mean, people, and he was driving alone, and we all know that at this point in time there is fog early in the morning, right? There will be fog, and it is difficult for anybody. And you right. only told me, and anybody who's driving all night will feel sleepy. I mean, this is harakiri of a sort, right? I mean, you Right, are you right, are driving alone. You're a national asset. You're a celebrity. Why would his support team allow him to do that? I mean, these are questions, and we don't keep learning. We don't keep learning right. from mistakes. I mean, some days back we saw what happened with Cyrus Mistry and the car accident because of speeding. Today we are seeing Rishabh driving early in the morning. An accident happens because of fog or for whatever reason it is, and he's alone. And clearly his family now is in trauma. I'm told by Oroni that his mother obviously is in trauma. The BCCI True. has acted against something that Abhishek can tell us. Devashish, what are your sources telling you before we go back to Abhishek for another update? Yeah, we were just having a chat with Abhishek before this live began. Abhishek was telling me that he might be ruled out for at least a year or so because his right ligament is completely injured. So this is sort of an harakiri, as you have rightly mentioned, because he shouldn't have driving alone. And keep aside because it was fog, and we all know during this time what is it like in, especially in Delhi, in North India, because it's very so it's a It's serious very foggy serious there. Huh. issue, and hopefully he recovers soon because India needs him. India needs a player like Rishabh Pant because he's a match winner, we all know. Obviously things weren't as good as he might have liked because he was recently dropped from the Indian team. Now these things happen, so I think we all hope and pray that he recovers soon.
एब्सोल्युटली। बट अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूँ कि बीसीसीआई की तरफ से अभी क्या बोला जा रहा है, क्योंकि यू नो अभी हमने जैसे बात की है, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया है उनके उसके ऋषभ पंत के मैनेजमेंट की टीम की तरफ से भी, कि आप सुबह सुबह विंटर मॉर्निंग में, हमें पता है कि नॉर्थ इंडिया में कितना फॉग होता है, विजिबिलिटी क्या रहती है, उसके बावजूद आपने ऋषभ पंत को उनकी मर्सिडीज गाड़ी थी, तो उसमें उनको आपने अकेला छोड़ दिया। हमने देखा है इन पास्ट में भी मोहम्मद शमी का भी कार एक्सीडेंट हो चुका है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था इस जगह। तो उनके उसके तरफ से बीसीसीआई क्या कह रही है इस पूरे मामले में? मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अभी इसमें कुछ कहेगी, और कहेगी भी तो वो इतना ही कहेगी कि इनकी चोट लगी है, उनकी टेक केयर हम करेंगे, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन इसमें बीसीसीआई की ना कोई गलती है, ना किसी नहीं, उनका स्टेट कोई गलती एसोसिएशन बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल। हाँ, हाँ, कोई गलती कि नहीं। ना किसी स्टेट एसोसिएशन की गलती है, क्योंकि जब आप टीम के साथ रहते हो तब आप बीसीसीआई की प्रॉपर्टी हो। करेक्ट। जब आप टीम से जैसे ही आप हटे, आप भले ही आप उसी होटल में रह रहे हो, आप आप अभी ऋषभ पंत ने बीच जब बांग्लादेश में थे तो उन्होंने छुट्टी मांगी थी, तो उन्हें पूरी 3 मैचों की छुट्टी मिली। उस समय वो एक हफ्ते तक कहीं भी जाए, उससे बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं। एकदम सही बात। व्हेन यू बिल्कुल। लीव योर, जब आपने टीम को छोड़ दिया है, उसके बाद बीसीसीआई आपको ना ही फॉलो करता है, ना वो वाडा है, ना वो नाडा है। वो वो ऐसे ही चलता आया है उस समय। ये टोटली ऋषभ पंत का और ऋषभ पंत की टीम का फॉल्ट है। टीम का फॉल्ट भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि पता नहीं मैनेजर की वो कितनी सुनते हैं। मैनेजर मैनेजर तो पैसे लेके काम करता है। मैनेजर तो, मैं ऐसे कई प्लेयर को जानता हूँ जो जो अपने मैनेजर को हड़का देते हैं कि चलो तुम अपना काम करो, मैं 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 ये करने जा रहा हूँ, तुम अपना बैठो। तो वो मिसमैनेजमेंट हुआ है। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूँ। मैं कार से ही अपने घर कानपुर जाता हूँ, लेकिन मैं जनवरी फरवरी दिसंबर लास्ट से लेके और जनवरी तक कभी भी कानपुर जाता ही नहीं हूँ। जाता हूँ तो जाने का मतलब है अपनी जान को रिस्क डालना। तो इधर हम्म। का ट्रेंड ऐसा ही है कि आप जो है, जब कोहरा पड़ता है तो आप कार का यूज कम करें, और खास तौर से रात में तो बिल्कुल मत करें। और आप जब उत्तराखंड जा रहे हो तो वहां तो कोहरा ही कोहरा होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, उन्होंने गलत फैसला ले लिया। बिल्कुल, अगर कार का इस्तेमाल करना भी है तो सीट Abhishek, बेल्ट पड़ना जरूरी है। हाँ। one point. I mean, firstly, you are absolutely right about the BCCI thing. Let's be very clear. This has nothing to do with the BCCI. राइट। BCCI is not at fault. In fact, now the BCCI has swung into action and has done so very quickly. So this has nothing to do with the BCCI. We must be very clear for all our viewers. As far as Rishabh Pant support team is concerned, this is the responsibility of the management as well. I mean, yes, the player, but this is where it becomes a little dicey. As Abhishek said, whether Rishabh sort of pushed his way, we don't know. Would he do that? We don't know. But when some things like this happen, and Abhishek, you have tweeted saying it will take a year and a half. I mean, can दैट you इज द give मेजर us some टॉकिंग पॉइंट। details on that? That is far more important to us. Rishabh Pant, the cricketer, if you are saying a year and a half, that means the World Cup's gone, Australia series gone, this whole year gone, World Test Championship gone. What is your sense? What is your sense as far as his recovery time is made? Can you give us a sense of जो what you are डॉक्टर getting that as far as that is concerned? जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि राइट साइड का लिगामेंट गया है, और सर पे भी चोट है, तो बहुत 1 डेढ़ साल उन्हें होगी। उसके बाद क्रिकेट है, उन्होंने उन क्रिकेट करी है। डॉक्टर ने भी मुझे बताया 1 डेढ़ साल खेल तो उसकी क्रिकेट को कहाँ तक जो है वो परेशानी हो सकती है, तो उन्होंने उस अभिषेक जी का थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा था, तो मैं जस्ट सम अप कर देता हूँ पूरा पूरा सिचुएशन। जो वो बताना चाह रहे थे कि ऋषभ पंत बच का गई है, राइट लेकिन लिगामेंट का जो थोड़ी सी एरिया है। हाँ हाँ। He अभिषेक जी। back. Yeah, yeah. हाँ, लेकिन उनकी जान बच गई है, लेकिन लिगामेंट की प्रॉब्लम बड़ी है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल तक की समस्या होगी। डॉक्टर से बात करने के आधार पर, और एक क्रिकेटर ने डॉक्टर से बात करी है, फिर मुझसे बात करी है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। 1 से 1.5 साल, 1 से 1.5 साल इज अ मेजर मेजर लॉन्ग गैप। मतलब पूरे मिसमैनेजमेंट को अगर आप पकड़ेंगे ऋषभ पंत की टीम से,
फिर उनके तरफ से थोड़ा सा कि सीट बेल्ट नहीं पहनना, थोड़े से स्लीपी हो जाने के बाद भी आप कोहरे में गाड़ी चला रहे हो, दैट एंड ऑल टुगेदर सम अप, it is not a ideal situation, Buryada. It is not, as Devashish said. It was sort of, he's an asset, as Abhishek says, 1.5 years, if that is a realistic assessment. I mean, you know, you feel why. You feel, as an Indian cricket analyst, as an Indian cricket fan, the question is why. Abhishek, one more question. I'm told the BCCI has swung into action. Do you now think the board will take over the treatment? They will control? Will they leave it to him? Because what are the details? He's being moved to Max Dehradun. वहां ले जाया जा रहा है. Scans हाँ. होंगे. मुझे ये बताया गया है that he will undergo scans. Max Dehradun में लिया जा रहा है. Air ambulance भी ready करके रखे हैं. Do you think the BCCI will not now take over the treatment because he's an asset and a centrally contracted cricketer? आपको क्या लग रहा है? तो मुझे ये जानकारी मिली कि सुबह जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो उनको रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल ले जाया गया। सक्षम हॉस्पिटल ने मैक्स देहरादून में रेफर किया और सुबह 9 बजे तक मैक्स देहरादून में इलाज चल रहा है। तो अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी कि उनको दिल्ली रेफर किया जाए, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई चोट नहीं है कि जिसका इलाज देहरादून में मैक्स में नहीं हो सकता है। उनका जो भी फ्रैक्चर का इलाज है या जो भी लिगामेंट का इलाज है, फिलहाल अभी उनका इलाज वहीं पर हो रहा है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया है, तो उनकी तरफ से बयान भी जारी किया गया। तो मुझे लगता है कि अभी वो वहीं पे इलाज कराएंगे। उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस में जो डॉक्टर से हटकर जो फिजियो का प्रोसेस है, या जो एज ए प्लेयर को जो जिस तरीके का जो इलाज चाहिए होता है या जिस तरीके की रिकवरी चाहिए होती है, उस समय बीसीसीआई का रोल बनेगा। जब ये पूरी तरीके फिट हो जाएंगे और फिर एनसीए में जाने वाले में, मुझे लगता है वहां पर रोल बनेगा। अभी ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि बीसीसीआई की कोई एंट्री होते हुए दिखे, या बीसीसीआई ये कहेगा जरूर कि आपके इलाज का खर्च हम उठाएंगे या आपको और बेहतर इलाज की जरूरत है तो हम दे सकते हैं। वो आने वाले घंटों में क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके हिसाब से यही है कि जो मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में इलाज चल रहा है, जो वहाँ के डॉक्टरों से बात हुई है, वो आउट ऑफ डेंजर है, उनको कोई समस्या नहीं है, उनको जो तकलीफ थी उसका इलाज कर दिया गया है। बाकी जो प्रोसेस है आने वाले महीनों में जो चलेगा, उसको लेके हो सकता है दूसरे डॉक्टरों से राय ली जाए, सेकंड वो लिया जाए। इस तरीके से फिर बीसीसीआई को लगता है कि कहीं और इलाज कराने की जरूरत है, तो फिर उसमें मुझे लगता है कि आगे वो होगा। Very important updates there, Very Shubhan, important. from Absolutely. Abhishek. Clearly, Absolutely. sort of giving us all the details there. Shubhan, question for you and Devashish. I mean, you are also tracking the story. Mhm. It happened at 5:30 a.m. in the morning. Can you Right. give us a sequence? Because Abhishek just said that seatbelt was an issue. He broke the glass. He sort of literally escaped when there was fire. You told me on the phone that the fire was quite serious. Do you have any Right. details on that before I go to Devashish? See, whatever visuals I've got from Dehradun, from the place where the accident happened. The impact was so hard on the railing, the roadside railing, that it got completely shattered. The railing got completely diverged into a different shape altogether. So that was the kind of impact Rishabh's car had with that railing. So the car was on high speed. That is one point. The second point, the front screen of the car, it got shattered. Thankfully, the car was a good one. It had airbags and all. That's why he managed to come out of the car alive. But after that, the car उसमें आग लग गई, and it was pretty hard to stop that fire. That is the initial reports I got this morning after the news came out that Rishabh Pant has suffered the accident. But thankfully, to all our viewers, Rishabh Pant is out of danger. That is one big point. But as Abhishek ji said, that he might have a lengthy spell on sidelines due to the ankle ligament stuff he's suffered.
Devashish, what are the lessons from this? Before I take closing words from Abhishek, what are the Yeah, yeah, lessons that absolutely. you will say? What are the Absolutely, lessons? you are an Indian cricketer. Means, you have a responsibility towards nation. Means towards Indian. Obviously, BCCI has got nothing to do, as we have been telling time and again. It has got nothing to do with BCCI, neither DDCA, neither. Obviously, he should have taken a driver along with me. That's the basic. Means you should have carried. Means you why on earth would you be traveling without a driver? And that too, That is the point. Yeah. when the conditions are visibility is not that great. So the lesson that we has learned from this incident is that whoever, not the contracted cricketers, for anyone, you drive when you drive during this weather, during in particularly North India, you should always carry a driver with you, because Abhishek, yeah, Devashish. Yeah, go on, go on. जब because the Devashish, go on. pictures जब that we इंडिया saw, the pictures that Abhishek just 1 minute, the pictures that we saw is very scary, because the bruises towards his back, is his car, the video that we just saw getting viral on social media is completely damaged. So we could imagine the impact of the accident. So thank God that it's not life threatening. He's stable now. He should recover. But this is a lesson that we all need to say. Why not take a carrier driver with you? अभिषेक लास्ट वर्ड्स टू यू मैं जानता हूं कि यार आप केरला में हो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस और ये सारे अपडेट्स देने के लिए लास्ट वर्ड्स टू यू बिफोर वी क्लोज द शो जब इंडिया टीम को जीतने के लिए और आईपीएल जीतने के लिए प्रोफेशनल क्रिकेटर की जरूरत होती है, तो कार चलाने के लिए भी आपको प्रोफेशनल ड्राइवर रखना चाहिए। और एक बड़े क्रिकेटर ने मुझसे कहा कि आप इतना पैसा कमाते हो, आपको इतनी रात में निकलना नहीं चाहिए, आप देश के एसेट हो। आपको अगर जाना भी है तो आप कम से कम प्रोफेशनल ड्राइवर रखो, क्योंकि आप कंटिन्यूएशन में टूर पे रहते हो, आप उतनी गाड़ी नहीं चलाते हो, आपको उसका अनुभव उतना नहीं है, और आप रोज भी गाड़ी नहीं चलाते हो, तो आपको एक प्रोफेशनल ड्राइवर रखना चाहिए था। अगर जाना इंपॉर्टेंट ही था तो आप उससे जाते। हो सकता तब भी एक्सीडेंट होता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप Hmm. बच जाते, Hmm. लेकिन आप अपनी तरफ से जो भी जरूरी चीजें होती हैं वो करते हैं। जान है तो जहान है। सबसे अच्छी बात है कि उनकी जान बच गई। कब खेलते हैं कब नहीं खेलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, अच्छी बात ये है कि इन एक दो दिन से जो है काफी दुखद खबरें आ रही थी, तो ये खबर जो है उतनी दुखद नहीं रही। अच्छी, मतलब इसको मैं पॉजिटिव वे में लूंगा कि कम से कम उनकी जान बच गई है। उन्होंने एथलीट थे तो उन्होंने कूद के अपनी जान भी बचा ली, कार से बाहर भी निकल आए हैं। तो हो सकता है इससे वो आगे सबक लेंगे। और वो, उनको सबसे बड़ी बात ये है कि अपने जो बड़े क्रिकेटर हैं उनसे, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, उनसे सीखना चाहिए कि जब वो बड़े क्रिकेटर बन गए तो उसके बाद वो बड़े बने रहे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनके ऊपर सवाल उठे। क्रिकेट के ग्राउंड में भले सवाल उठे हों, लेकिन बाहर सवाल नहीं उठे। तो उन सब चीजों से बचना चाहिए। वो भी जाते होंगे अपनी माँ से मिलने, वो भी जाते होंगे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, वो भी जाते होंगे, सब जगह जाते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके की वो नहीं की। तो मुझे लगता है कि शायद ऋषभ पंत के करियर का ये सबसे बड़ा मोड़ होगा। उनको शायद वो और पॉजिटिव होके आगे बढ़ेंगे। basically he's saying responsibility Shubhan he's talking about बिल्कुल। not being reckless he's talking about being a little more socially responsible because he's a national asset over to you Shubhan to Absolutely. close it Absolutely. I mean, this is a lesson to everyone, each one of us, to all, everyone who is watching, who is tracking this news, who is going through this news. Be safe, be responsible. I mean, drive the car, drive fast if you have space, but wear a seatbelt. Get all your protection in. If you're driving a bike, get your safety gears in. If you're driving a car, be safe. If you are seeing there's fog, there's density, there's no visibility, then no need to take risk, because now we have seen it in the past that a car accident has happened to Mohammad Shami as well. But since then, he has been a responsible citizen, as in not to be a reckless driver. Now Rishabh Pant, thankfully, is out of danger right now, but he gives us a major lesson that if you are driving, especially in winter mornings in North India, then you have to be very, very careful. And there's no place for complacency, no place for recklessness when you are driving in North India, especially in winter season. But right now, the situation is under control. He's been treated in a the Dehradun hospital, and hopefully we'll get some more updates. And whenever we'll get some updates, we'll be the first one to give the news to you guys.
But right now, Rishabh Pant is out of danger. Yes, he has suffered injuries on his head, back, and his right foot, right ankle. But he's out of danger. That's the best part about this entire showdown, Muriana. Yeah, so I'll close it. I'll close it because we'll track this. Abhishek, I'll let you go. I'll let you go. I know you're driving in Kerala. Devashish Sen, Shubhan Chakravarti, thank you very much. Abhishek, Thank you. sincere thank you to you for coming on board so soon. I mean, I know it's difficult when you're on a holiday. Thank you very, very much, everybody. We'll Thank you. keep tracking the story and